Welcome once again. In this video, we will discuss about the topic of index number with respect to paper 2018 Federal Board. So let's start the video. तो इस पेपर के अंदर जी जो एक्सटेंसिव क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट चेन इंडेक्स नंबर्स फॉर द फॉलोइंग डाटा, यूज मीडियन एज एन एवरेज or products. There are multiple products, so it is the case of composite index number. और इसके अंदर चेन इंडेक्स जो है वो पूछा गया है। तो ये अनवेटेड मेथड जो है उसका एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड जो है हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, यानी कि चेन इंडेक्स का मेथड हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम इसके लिंक रिलेटिव्स, क्योंकि चेन इंडेक्स जब भी कैलकुलेट किया जाता है तो उसके अंदर लिंक रिलेटिव्स की ज़रूरत हमें पड़ती है, और लास्ट स्टेप के अंदर हम इसका चेन इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। फार्मूलाज दोनों के गिवन हैं। लिंक रिलेटिव is always equals to Pn divided by Pn minus 1 multiplied by 100. Pn stands for current time period price and Pn minus 1 is considered as previous time period price. और चेन इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो है प्रीवियस चेन मल्टीप्लाई बाय करंट एवरेज डिवाइडेड बाय 100। मोस्टली 3 एवरेजेस आपको पूछी जा सकती हैं, एक मीन, एक मीडियन और थर्ड एवरेज जो है वो आपकी पूछी जा सकती है, जियोमेट्रिक मीन। तो नेक्स्ट पेपर्स के अंदर वो एवरेजेस भी डेफिनेटली किसी न किसी जगह पे पूछी जाएंगी, तो उनको भी हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले आप देखें, प्रोडक्ट्स आपके पास 4 हैं और टाइम पीरियड देयर आर 4 टाइम पीरियड 1958, 59, 60 एंड 61। So first step is to put down this data into tabular form, और दूसरे नंबर पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले इसके लिंक रिलेटिव्स। सो फर्स्ट पीरियड शुड बी कंसिडर्ड एज योर बेस पीरियड। तो यहाँ पे आप फर्स्ट जो लिंक रिलेटिव है ए का वो एज अ बेस 100 हम ले लेंगे, बी में भी 100, सी 100, डी 100, मीडियन ऑलवेज ऑल्सो 100 एंड चेन इंडेक्स शुड बी 100। फ्रॉम 1959 यहाँ पे हमने 100 इस वजह से लिया है बिकॉज वी हैव नो प्रीवियस टाइम पीरियड प्राइस, सो दैट इज़ वाई वी कंसिडर्ड 1958 as 100. So from 1959, from here we will apply the formula of link relatives. So Pn for 1959 for product A is 98, and for product A Pn minus 1 for this period is 94. So 98 divided by 94 multiply by 100. For product B, it should be 83 divided by 98 multiply by 100. So 83 divided by 98 multiply by 100. For C, it should be 97 divided by 82 multiply by 100. And for D product, 105 divided by 122 multiply by 100. So ये आपके प्रोडक्ट A, B, C, D के लिंक रिलेटिव्स हैं 1959 के अंदर 104.25, 84.69, 118.29 and 86.86. Now we jump to the next period, and that is 1960. So for this 1960, your Pn are 96, 87, 95 and 107, and for this period your Pn minus 1 previous time period price is 98, 83, 97, 105. So 96 divided by 98 multiplied by 100, 87 divided by 83 multiplied by 100, 95 divided by 97 multiplied by 100, and 107 divided by 105 multiplied by 100. So these are your link relatives which are calculated here.
for 1960. After that, your next time period is 1961. So 94, 82, 97, 112, these are your 4 PN. And for this time period, PN minus 1 is 96, 87, 95, 107. So link relatives will be 94 divided by 96 multiplied by 100, 82 divided by 87 multiplied by 100, 97 divided by 95 multiplied by 100, 112 divided by 107 multiplied by 100. So these are your 4 link relatives. So after the calculation of link relatives, now we jump to the next part of the question, and that is to calculate the average. So your required average, which is asked in the paper, and that is median. So median is the central point of the data. It is a locational average, and first of all, we should arrange the data into ascending form. So least value is 84.69. After that, second greatest value is 86.86. Third greatest value is 104.25, and fourth greatest value is 118.29. मीडियन के अंदर ये ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम अरेंज करें, और अरेंज करने के बाद जो उसकी सेंट्रल, अगर तो डाटा ऑड है तो फिर तो हमें सिंगल वैल्यू मिल जाएगी, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डाटा इवन है, जैसा कि इस केस में अगर आप देखें, देयर आर 4 प्रोडक्ट्स, सो डाटा इज़ इवन, so we will have to locate the most central 2 values and divide these values, the sum of these values, by 2. So central values are 86.86 and 104.25. So we just add up these 2 values and divide by 2, result is 95.555. बिल्कुल इसी तरह 1960 के अंदर ये जो 4 वैल्यूज़ हैं, इनमें सबसे कम जो वैल्यू है वो है 97.93 फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आ जाएगी 97.95, थर्ड नंबर पे आ जाएगी 101.90 और फोर्थ नंबर पे आ जाएगी 104.81। तो सेंटर वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं, यानी कि सेकंड नंबर पे और जो थर्ड नंबर पे है, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो मीडियन है 99.925। और सेम 1961 के अंदर जो फर्स्ट नंबर पे वैल्यू है वो है 94.25, सेकंड नंबर पे है 97.917, थर्ड नंबर पे है 102.10 और फोर्थ नंबर पे है 104.67। तो मोस्ट सेंट्रल वैल्यूज ये 2 हैं, 97.917 एंड 102.10। वी जस्ट एड अप दीज 2 वैल्यूज and the sum should be divided by 2 and result is 100. After that, after getting the values of median, next step is to calculate the finally chain index. So first chain index is 100. After that, for 1959, formula for chain index is previous chain multiplied by current average divided by 100. So previous chain is 100. So we place 100 here, multiply by current average, that is 95.555 divided by 100, and your chain is 95.555. After that, now your previous chain for 1960 is 95.555 multiply by current average, that is 99.925 divided by 100, result is 95.483. And for next period 1961, your previous chain is 95.483 multiply by current average, that is 100, and finally your result is 95.483. तो ये है जी आपका चेन इंडेक्स। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस, लेस्पेयर्स इंडेक्स नंबर 115, फिशर्स इंडेक्स नंबर 112.98, पास्चेस इंडेक्स नंबर आपने कैलकुलेट करना है। तो आपको मालूम है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, कि जो फिशर का इंडेक्स नंबर है वो लेस्पेयर और पास्चेस के इंडेक्स का जियोमेट्रिक मीन है। तो यानी कि मतलब क्या हुआ कि दोनों के इंडेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो बराबर होता है फिशर्स के इंडेक्स नंबर के बराबर।
तो जस्ट इस फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। फिशर का इंडेक्स नंबर है 112.98, तो वी जस्ट प्लेस 112.98 इंस्टेड ऑफ फिशर्स आइडियल इंडेक्स equals to, we don't know about the Passches index, multiply by Laspeyre's index, that is 115. So 115 root. After that we just take the under root of 115, that is 10.7238, and after this value, first of all it will be divided by 112.98 डिवाइड बाई 10.7238, क्योंकि ये इस साइड पे इक्वेशन के साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो व्हेन इट गोज टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन इट विल बी डिवाइडेड बाय 112.98. सो Passches इंडेक्स अंडर रूट इक्वल्स टू 10.5354. अब ये रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, और स्क्वायर रूट लेने से आपका Passches इंडेक्स नंबर जो है ये बराबर आ जाएगा 110.994. After that, next question is find index number from the following data taking average of all 5 years as base. So here product is only 1, so it is the case of simple index number, and your base is the average of all periods price. So first of all हम इन तमाम की एवरेज निकाल लेते हैं, और एवरेज बड़ी इजी है, मीन इसका निकालना है 9 + 6 + 9 + 11 + 10 डिवाइडेड बाय n, and what is n? There are 1 2 3 4 5 time periods, so 5 is your n. 45 by 9, and this 9 is your base price. और बेस प्राइस लेने के बाद हम सिंपली इनके प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट कर लेंगे। प्राइस रिलेटिव्स का फॉर्मूला है Pn डिवाइड बाई P नॉट मल्टीप्लाई बाई 100. लिंक रिलेटिव्स जो कि चेन के अंदर यूज़ होते हैं वो अभी हमने सॉल्व किया है, Pn डिवाइड बाई Pn -1 मल्टीप्लाई बाई 100. बट इन केस ऑफ प्राइस रिलेटिव्स द फॉर्मूला इज Pn डिवाइड बाई P नॉट मल्टीप्लाई बाई 100, इन विच Pn is your current time period price and P naught is your base period price. So base price we already calculated here, that is 9, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर किया गया था कि आप तमाम टाइम पीरियड की प्राइस की एवरेज को बेस लें, so that is why we calculated this average, and that is 9. So Pn for 1970 is 14, so 14 divided by 9 multiplied by 100. For 1971, 15 divided by 9 multiplied by 100. For 1972, it will be 16 divided by 9 multiplied by 100. For 1973, it will be 17 divided by 9 multiplied by 100. And for 1974, it will be 18 divided by 9 multiplied by 100. And these are your price relatives. 155.55, 166.67, 177.77, 188.88, and 200. So for 1970, with respect to base, there is an inflation of 55.55%. 100 से ऊपर जितना भी होगा वो इन्फ्लेशन है, और 100 से नीचे जितना भी होगा वो डिफ्लेशन है। 1971 के अंदर 66.67% इन्फ्लेशन, 1972 इन्फ्लेशन इज 77.77%, and 1973 इन्फ्लेशन इज 88.88%. And for 1974 there is an inflation of 100%. After that, objective MCQs of paper 218. If all the values are not of equal importance, the index number is called weighted index number. क्योंकि अगर तमाम इंडेक्स जो हैं उनकी अगर इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं है तो लाजमी बात है कि उनके साथ हमें वेट असाइन करने पड़ेंगे. वी विल हैव टू असाइन द वेट टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेंस. तो वो इंडेक्स नंबर जो है वो वेटेड इंडेक्स कहलाएगा. इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट इंडेक्स नंबर. क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसके अंदर हमें जो इंडेक्स लेना पड़ेगा वो कंपोजिट इंडेक्स लेना पड़ेगा.
सो ये था पेपर 2018 का। नेक्स्ट कमिंग वीडियोस के अंदर मज़ीद पेपर डिस्कस करेंगे इंडेक्स नंबर के हवाले से। और टिल देन स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर पर्सन अराउंड यू। थैंक यू।